Welcome back to Nationalism in Europe, and let's continue our topic. What did liberal nationalism stands for? See, now here on this topic becomes very important and the chapter because every paragraph is asked for a question. तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है हर पैराग्राफ का. So first paragraph is, see, in terms of politics, what did liberal nationalism stands for? पहला थिंग, लिबरलिज्म वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबर विच सिंपली मीन्स फ्री. एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बट देन नाउ फॉर द न्यू मिडिल क्लास whom we were talking about in the previous slide, it stood for the freedom of individual and equality before law. Why? Because this was missing. When you are under the rule of a monarch, you don't have that individual freedom, nor you are equal to law or equal before law. Because those who are aristocrats, those who are rich, actually plays with law, and law is always favoring them. So individually, for me, for new middle class, liberalism stands for freedom of individual and equality before law. Now politically, what is liberalism? It's a government by consent. Now when I say government by consent, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो आपकी मर्जी की है? डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी याद रखिए, liberalism stand for politically going for democracy. Now liberalism during French Revolution in France stood for end of autocracy and clerical privileges. जो सेकेंड एस्टेट है, जो फर्स्ट एस्टेट है, उन्हें जो प्रिविलेजेस है उनका एंड चाहिए. और दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ गवर्नमेंट विच इज बीन run by a parliament, a representative form of government. Again I am talking about democracy. तो politically ये आपका liberalism है. Politically फ्रांस में वो क्या मैटर करता है, जनरल पॉलिटिकल टर्म में उन्हें क्या चाहिए और मिडिल क्लास के लिए क्या चाहिए. 3 पॉइंट्स 3 मार्क के लिए ये काफी बार आ चुका है और एमसीक्यू में भी आपको वो कोई भी एक चीज पूछ सकते हैं. मूविंग अहेड, अब सेकेंड पैराग्राफ की बात करेंगे हम. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सफरेज. सो व्हाट इज सफरेज? It's right to vote. Now here it becomes very important for us to know what all the other form of government which came in France. What was the voting right? And here they say, though there was liberalism socially, but politically it was not there. Because never ever in French or during the French Revolution in France, equal political rights were given. Some or the other way, there was some condition. For example, you remember when journal estate was removed and then came National Assembly, what was the voting pattern? Only active citizen will cast the vote. Voting right was there for women? No, it was not there. Then what happened? What was the other form of government it came? See, when the next government came, it was of Robespierre. Maximilian Robespierre government. Convention. There also only the men above the age of 21 are going to cast the vote. Women को right to vote है? नहीं, और condition applied है. How about Napoleon? Voting right है ही नहीं, he is a dictator. और ज़्यादातर during French Revolution, men without property and women were excluded. क्योंकि when directory form of government came, again a condition was there, only the proprietary people will cast vote. Now again excluding women. बहुत बार आप देखोगे एक ही चीज आ रही है, excluding women and women and women. Also those who are not paying taxes. तो यूनिवर्सली है ये? नहीं है. सो पॉलिटिकल स्फीयर में कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यूज हुआ ही नहीं, हमेशा से एक कंडीशन रही. अब लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म दे वांट कि पॉलिटिकल आल्सो इक्वल राइट शुड बी देयर. और आप जानते हैं कि विमेन गॉट राइट टू वोट इन फ्रांस इन 1946, बहुत सालों बाद, ऑलमोस्ट 200 सालों बाद. मूविंग अहेड, हम अब बात करेंगे इकोनॉमिक स्फीयर की. नाउ यू आर इनटू बिजनेस and you are a trader and a merchant. So what would be freedom for you? Freedom for you simply should be abolition of unwanted taxes, abolition of the custom duties. ये आपका basic concept है. अब यहाँ पे कैसा हो रहा है? We'll just come back to that. Women and non-proprietary men organized themselves and what they demanded? They demanded equal political as well as economical right. So अब economical right उन्हें क्या चाहिए?
Simply, it stood for the freedom of market and abolition of state imposed restriction, जिसे हम taxes कहते हैं, मूवमेंट में custom duties कहते हैं. Freedom of market, you remember guild restrictions, so they don't want those restrictions. They want कि there should be no custom duties and the movement of goods and capital should flow freely without any unwanted restrictions. जब मैं बार बार एम्फोसिस कर रहा हूं कि अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन मतलब वहां पे कुछ है, ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड. 19th century German, especially German speaking region, they were around how many, 39 states, 39 confederation. Each of these had their own currency and weight and measures. Consider yourself as a trader or a merchant and you are here in German speaking region. अब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ पे थी क्या. सी, a merchant traveling in 1833 from a city called Hamburg to Nuremberg. ये दो शहर आपके लिए मार्क किए हैं. So you are trading from here to here and you are a textile merchant. So the measurement of a cloth was done by something called LE, E-L-L-E या L. So ये जो है measurement है cloth का. This was different across all the states. अब ये भी different है. For example, आपको see, consider yourself as merchant and you are a textile merchant. तो the measurement of cloth was done by LE. तो ये जो है measurement system है और ये हर शहर में या फिर हर 39 confederation में अलग था. For example, अगर मुझे आपको बताना हो तो ओके 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, बट देन हैम्बर्ग में 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, नुरेम्बर्ग में 85. ऐसे ही आपको सैक्सोनी में जो होगा वो डिफरेंट होगा. तो क्या ये इजी है ट्रेड करने में? नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब व्हाट दे आर सेइंग इज इफ यू आर अ ट्रेडर एंड ट्रेडिंग बिटवीन हैम्बर्ग एंड नुरेम्बर्ग, यू हैव टू पे 5% as custom duty at 11 places. In short, 55% of your earning is going in taxes. तो आपका कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बैरियर है एक्सपांशन ऑफ ट्रेड के लिए. तो you need to remove it. Now, who took that initiative? The initiative came in 1834 by Prussia, and they came up with a custom union called Zollverein. Now, Zollverein is nothing, it's a custom union who abolished all the tariff barriers and reduced the number of currencies from 30 to 2. Now, ये 32 to 2 ऐसे बड़ा अजीब सा लगता है. So, from 30 TO to 2 न्यूमेरिकल, इतने रिडक्शन हुआ ताकि ट्रेड जो हो वो एक्सपांड हो. और आपको मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ है इट इज डन बाय एली, विच वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. मैंने तो आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिया. यहां देखिए, इफ यू आर अ ट्रेडर, देखो अ मटेरियल विच इज ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ. इन मेज इट इज 55.1 सेंटीमीटर. और देखिए ना, कैलकुलेशन भी कितना सा प्रिसाइज है. 54.7, 55.1, मैं तो 90 और 80 की बात कर रहा था. तो एज एन ट्रेडर यू आर इन बिग लॉस, वो भी जब व्हेन आई एम पेइंग 5% एज कस्टम ड्यूटीज. थैंक गॉड Zollverein came, thanks to Prussia. Now this stimulated the trade. Now traders and merchants found it very easy and the progress of the Europe, especially the German state, was strengthening. And now the changes will take shape. So for those changes you have to wait. But by that time, keep smiling and keep revising. Take care.